तो पिला माने एठी 2023 रो आर्ट्स क्वेश्चन जोटा कि इंग्राजी आज प्रश्न आम आलोचना करवा। सेट ए देखंतु ए सेट ए को आम आलोचना करवा। प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर आम देखा पाइबा एवं प्रत्येकटी प्रश्न को बुझीबा। ठीक अच्छे समस्ते रेडी प्रत्येकटी प्रश्न को बुझीबा। इंग्राजी ये जो प्रश्न आज जो आर्ट्स रो प्रश्न सेट ए रेगुलर पिला मानकर प्रश्न आम देखा केमती केमती प्रश्न आसचे प्रत्येकटी प्रश्न को आम खोजा। प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर आम जानिबा। ठीक अच्छे प्रत्येकटी प्रश्नर उत्तर आम जानिबा। देख पिला माने एठी आमे जीवा प्रथम कौन अच्छी ना गोटे एक्सट्राक्ट पड़ी। ये जो एक्सट्राक्ट आसी कौटू ना गोटे प्रोज रु से प्रोज हूँ कौटा ना लिखाई ऑलरेडी देख ए प्रोज रु आसी से प्रोज टी ऑन एग्जामिनेशन जोटा कि आमे करिथिले काली ही प्रैक्टिस करिथिले आमे ऑन एग्जामिनेशंस बैलेड ऑफ फादर गिलिगन ए भली सब आमे एकाठी आमे माने प्रैक्टिस करिथिलु। तेणु देखा कौन कौन आंसर हम समस्ते आंसर मो संगे डिस्कशन करेंगे देखिए। ठीक अच्छे प्रथम प्रश्न एटी हाउ इज द स्विमिंग बाथ एट हैरो डिस्क्राइब्ड। ओके तो हाउ इज द स्विमिंग बाथ माने एट हैरो डिस्क्राइब्ड। तो स्विमिंग बाथटा केमिति हैरो रे अच्छी जोटा कि डिस्क्राइब करिसेंती अथॉरिटी डिस्क्राइब करिसेंती कि भलिया स्विमिंग बाथ अच्छी। ओके तो कि भाया स्विमिंग बाथ अच्छी देखा आम। तो यही प्रश्नर उत्तर। ओके तो कौन ना द स्विमिंग बाथ वाज द बिगेस्ट स्विमिंग बाथ नहीं कि तुम लिखि द स्विमिंग बाथ एट हारो स्कूल वाज द वेरी बिग वन और द बिगेस्ट वन। ओके द ऑथर हैज एवर सीन माने ऑथर देखी जोटा कि केबे भी देखी यही भाया बिगेस्ट स्विमिंग बाथ थिला स्विमिंग बाथ उपरे। ओके तापर कौन इट वाज मोर लाइक द बेंड ऑफ ए रिवर माने नदीर अंका बंका बेंड भलिया सेटा देखिया पई एंड देन ए बाथ एंड इट हैड टू ब्रिजेस से आलोचना करछंती दीटा ब्रिज अछि ता ऊपरे अक्रॉस इट। ओके एतिकी लेखिबो एतिकी लेखाबो। ठीक अछि तापरे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि। नेक्स्ट प्रश्न होछि हाउ डिड the boys enjoy their leisure at the bath। how did कि भली भाबरे the boys ओके बॉयज माने एंजॉय करुथुले लीजर टाइम रे एटा बाथ से बाथिंग पूल रे केमिति एंजॉय करुथुले हाउ डिड द बॉय एंजॉय। ओके तो हाउ डिड द बॉय एंजॉय इन द बाथ। ओके तो कौन 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 करुथुले आमे आलोचना करिथिलु काली आलोचना करिथिलु एटा पिला माने देखो तो कौन करुथुले ना दिस बॉयज कौन करुथुले वी यूज टू रिपेयर ऑफ आवर्स दिस बॉयज दे आर स्पेंडिंग आवर्स एट ए टाइम एंड बास्क between the dips eating enormous buns on the hot asphalt margin। एटा होची आंसर से माने कौन करुथुले ना से माने सेठी से माने सेठी कौन करुथुले से माने डीप लगाउथुले। ओके दे स्पेंड आवर्स एट अ टाइम द स्पेंड आवर्स इन द बाथ तो डीप्स रे द स्पेंड आवर्स एंड बास्क between द डिप्स between आवर लिखि माने between द डिप्स eating enormous buns माने ड्यूरिंग द माने between द डिप्स माने डिप्स लगाउथले माने बुड़ लगाउथले पुणी उठी आसुथले सेही भितरे से माने दे वर आल्सो एन्जॉयिंग विथ द बन्स माने पाउरुटी गोटे बिस्कुट जातीय से माने खाउथले ऑन द हॉट एस्फल्ट मार्जिन बुझियला एंड दैट वाज ए गुड जोक फॉर देम। ओके तो यही भली भाबरे से माने कोन करूथले ना से माने हाउ डिड द बॉयज एन्जॉय देयर लीजर एट द बाथ। ओके तापर देखो व्हाट काइंड ऑफ ए फन डिड द बॉयज हैव टू एट द बाथ को बढ़िया फन थिला व्हाट काइंड ऑफ फन को बढ़िया मजा से माने करुथले से माने जो मजा करुथले एटी लिखाई कौन दे आर पुशिंग इच अदर देखो एटी लिखाई नेचुरली इट वाज ए गुड जोक टू कम अप। ओके टू कम अप बिहाइंड सम नेकेड फ्रेंड or even enemy and push him। okay केमिति मजा करथले they were making fun by coming up behind someone who is naked। okay and even enemy and push him
into the pool. ओके तो एटा होची माने आंसर ठीक अछि एई भली मजा से माने करूथले पुश माने ठेली दबा काकू तापर देखो हाउ डिड द राइटर मेक ए फन ऑफ द बॉय स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द बाथ जे स्टैंडिंग ऑफ द ब्रिक ऑफ द बैक जे छिड़ा होईची सेठी माने गोटे पिलाटी छिड़ा होईची ता सहित केते मजाक कले से कौन मजाक कले ना से ताको ठेली देले देखो मेडिटेटिव मूड रे लिखा होईची मेडिटेटिव मूड रे से छिड़ा होईतले देखि दोची ओके तापर देखो एठी यस से कहउचंती कौन ही वाज नो बिगर देन आई वाज सो आई थॉट हिम फेयर गेम कमिंग कौन ना से कौन कले एठी लिखा होईची देखो ओके एठी लिखा होईची यस कौन कले आई पुश्ड हिम देखो तो कौन ना द ऑथर पुश्ड हिम द ऑथर पुश्ड दैट बॉय हु इज स्टैंडिंग इन ए मेडिटेटिव पोस्चर द ऑथर पुश्ड हिम ओके ठीक माने कौन कौन करथिले तांको ठेली हेतिले पुश्ड हिम इन होल्डिंग ऑन टू हिज टावेल माने टावेल टाकू धरिक्री से पुश कर दे ठेली देथिले ओके आउट ऑफ ह्यूमैनिटी एतिक लिख दे परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय रिएक्शन कौन थिला तुम लिखि दबो मु तुमको कहितली रिएक्शन वाज वेरी कण वेरी ही द बॉय वाज वेरी एंग्री एटी लिखि चन देखो ओके and I was startled to see a furious face. The boy had a furious face and he became very angry on the author. Okay तापर देखिबा प्रत्येक प्रश्न आम आलोचना करवा गोटे गोटे प्रश्न आम आलोचना करवा आम डिस्कस करते कौन द ओल्ड प्रीस्ट जोटा कि पीटर गिलिगन को ऊपर डिस्कस करते से जिनसटा भी आज सकाଳେ भी मुझे जे पीटर गिलिगन यही जिनसटा पढ़ी पारे पीटर गिलिगन गोटे कौन द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन तांकर गोटे कौन पढ़ी पारे गोटे पैसेज देख कौन प्रश्न अच्छी व्हाई वाज पीटर गिलिगन वेरी मुझे तुमको कही व्हाई वाज पीटर गिलिगन वेरी ना पीटर गिलिगन was very because of attending to the most of dying flock माने से जो डाइंग फ्लॉक मान को ये लिखाई द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन was very कहीं थकी जाइए ना डे एंड नाइट ही was attending the patients okay attending कहा को अटेंड करथले ना attending the flock or the attending the people of the church or the flock okay without rest okay लिखि दे परिबो तापर देखिबा तो नेक्स्ट होची कोन क्वेश्चन व्हाट डज हिज फ्लॉक रेफर्स टू फ्लॉक माने कोन द फ्लॉक रेफर्स टू कोन फ्लॉक एटी फ्लॉक कथा को लिखाई छी द फ्लॉक माने कोन फ्लॉक माने होची पिला माने फ्लॉक माने होची द फ्लॉक इन द फर्स्ट स्टैंजा फ्लॉक रेफर्स टू पेरिशनर्स parishioners parishioners माने the people of the church parishioners okay the poet says that the old father's flocks when the followers of the father or the church people they are known as flocks okay those who are coming to the church okay next question when was Peter Gilligan nodding on a chair केते बेले व्हेन माने कौन केते बेले पीटर गिलिगन नोडिंग ऑन द चेयर ओके केते बेले ढुळई जाइथिले केते बेले से ढुळई जाइथिले केते बेले ना द मथ आवर लिखाइतो देखिबा नोडिंग ऑन द चेयर केते बेले ना वंस व्हाइल ही नोडेड ऑन ए चेयर एट द मथ आवर ऑफ इवनिंग ओके तुम लिखि दबो जे ही वाज नोडिंग ऑन द चेयर एट द मथ आवर ऑफ इवनिंग माने इवनिंग ओके तो दिस वाज द टाइम ऑफ द इवनिंग ओके नेक्स्ट What did the old priest complain of? कौन complain कले? What did the old priest complain of? कौन complain कले? ना the old priest कौन complain कले? ना कौन सी rest नहीं ये नहीं ये लिखा है देखो yes I have no rest nor joy nor peace कौन लिखी बात the old priest complained of having no rest nor joy having no rest nor joy nor peace okay nor peace no joy no rest nor peace okay सेटा कंप्लेन कर ले okay for the
because like the because he was attending day and night, okay, to the dead people and the sick people, okay, एमती लिखि दे परिबो। नेक्स्ट प्रश्न होची why did the old father beg God's forgiveness? Why did the old father beg God's forgiveness? काहेकि the old father से भगवान को क्षमा मागिले, काहेकि क्षमा मागिले, ओके, why did तो उत्तर कौन हम काहेकि उत्तर the priest begged God's forgiveness for because he had complained, because काहेकि ना because he had complained that he is not having कौन, he is not having rest nor joy nor peace, okay, से complain करथिले, that's why he begged the माने forgiveness, okay, begged God the forgiveness, कौन ना he begged, okay, God's forgiveness, okay, old माने did अच्छी past tense अच्छी begged हब, okay, begged God's forgiveness कहीं ना से complain करथिले बुझौची। अच्छा तापर देखिबा एटा आसीची कोठू ना एटा नॉन डिटेल स्टोरी जोटा आसीची स्टडीज नॉन डिटेल स्टडीज रो कोन आसी ना एटा आसी द डॉक्टर्स वर्ड, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स वर्ड आमे आलोचना करथिले, जोटा भी आलोचना करथिले प्राय सेटा पड़ी जाईची द डॉक्टर वर्ड्स, ओके। तो डॉक्टर वर्ड्स रो कोन क्वेश्चन थिला कोन देखि दबा, गिव एन अकाउंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल। डॉक्टर रमन एंड गोपाल को भीतर जो फ्रेंडशिप, ओके, ताकू बुझेबा पई कुआ जाईची बिकॉज माने डॉक्टर रमन एंड गोपाल को भीतर जो फ्रेंडशिप, ओके, तो ए जो माने फ्रेंडशिपटा केमितिया मु तुमको बुझेइतिली एवं आजि मध्य भलो भाबरे आमे टिके बुझी जिबा, ओके। तो एठी अछि आंसर, देखो फ्रेंडशिपटा केमितिया, ओके, यस एठी देखो, यस Gopal and Dr. Raman, Gopal and Dr. Raman, they had known each other for 40 years, 40 वर्ष धरिकी दुहे को जानी थिले, ओके, 40 वर्ष धरिकी दुहे को जानी थिले, ओके। तापर देखो स्टार्टिंग विथ kindergarten days, they had known each other for 40 years starting from the kindergarten बोल लिखि दबो, ओके, एटा फ्रेंडशिप। तापर कोन ना they could not meet frequently because they are engaged in their family and profession, okay, but occasionally on Sundays they were meeting लिखि दे परिबो, they were dining together and seeing picture and talking of each other's life and activities, and they have a classic friendship, okay, they have a classic friendship, ठीक अछि। तो एटा गोटे बहुत बढ़िया। तापरे नेक्स्ट अछि कोन, हाउ डिड डॉक्टर रमन कम टू नो अबाउट गोपाल्स इलनेस। गोपालर इलनेस असुस्थता विषय डॉक्टर रमन केमिति जानिबा को पाइले, ओके, केमिति जानिबा को पाइले, एटी अछि, ओके। डॉक्टर रमन, ओके, one day one busy round, okay, एटी कोन लिखा अछि देखो, यस, very good, एटी लिखा अछि in his busy round of work Dr. Raman had not noticed Gopal, okay, एगुडा लिखिबा दरकार नहीं, तो कोन लिखिबो द कोन in one day, on one day what happened na, on one day Dr. Raman saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall, बोधे कंसल्टिंग हॉल रे बसिचंती, कंसल्टिंग हॉल रे बसचंती देखिले गोपाल रो सन को, ओके। one crowded morning he saw, Dr. Raman saw that Gopal's son is sitting in the bench in the consulting hall, on a bench in the consulting hall, and Dr. Raman was so busy he could not talk to him, but when he got up when he got up and was about to pass on to the operation room, he called up the young man Gopal's son and asked what is the yes 80
young man and asked, what brings you here? For what you have come here? Okay, for what he has come here, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ so from the son only, from the Gopal's son only, he came to know about the Gopal's illness। okay, ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା next question। okay, read the passage given below and answer the questions that follow। okay, read the passage given below, answer the follow। read the passage given below। देखिबा प्रश्न question number 1, when do birds fly from the north to the south and when do they return? केतेबेले नॉर्थ टू साउथ जाती ओके बर्ड्स माने आ केतेबेले फेरंती। ओके देखिबा ए क्वेश्चन आंसर करिवा देखिबा। अच्छा एट देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द बर्ड लाइफ इज ट्रैवलिंग। every year during autumn and early and winter it लिखा है। birds travel from north regions to Asia, Europe, America एगुड़ा लिखा दरकार नहीं जेमती क्वेश्चन मार्क सेमती। they make the return journey again during the spring। देखो it लिखिबो every year during autumn and early winter birds travel from now north to south। okay so लिखा है and they make the return journey again during the spring and early summer। okay that is the answer, yes or no। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? कहीं बर्ड्स माने माइग्रेट करती स्थानांतरण करती नॉर्थ टू साउथ कहीं जाती। ओके तो ये देखिबा ड्यूरिंग विंटर लेक्स एंड रिवर्स आर फ्रोजन इन द नॉर्थ। ये देखो आंसर टा ये ड्यूरिंग द विंटर लेक्स एंड रिवर्स आर फ्रोजन इन द नॉर्थ माने माने लेक ह्रद आउ नदी गुड़िक फ्रोजेन हो जाए माने बरफावृत हो जाए नॉर्थ माने नॉर्थ रे विंटर समय रे। सो द वेदर इज सच दैट बर्ड्स कैन नॉट कैच आइदर इंसेक्ट्स और फिश फॉर फूड। से माने किसी खाद्य पाती नहीं। ओके कैच करि पारंती नहीं इंसेक्ट की फिश। एज द नाइट्स आर लॉन्ग द टाइम फॉर कलेक्टिंग फूड इज शॉर्ट एगुड़ा लिखा दरकार नहीं। इफ दे डू नॉट माइग्रेट दे विल पेरिश दैट्स वाई okay birds face a lot of dangers and harshness with traveling long distance एगुड़ा किसी लिखा दरकार नहीं। एटा होची आंसर कौन ना during the winter lakes and rivers are frozen in the north how the weather is such that birds cannot catch their insects or fish for food that's why they go to the go माने go from north to south बुझेला। अच्छा नॉर्थ टू साउथ से माने जानती से तापर देखिबा नेक्स्ट व्हाट डेंजर्स एंड हार्डशिप्स डू बर्ड्स फेस ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओके व्हाट डेंजर्स कौन विपद व्हाट डेंजर्स एंड हार्डशिप कौन डिफिकल्टी से माने फेस करती डू बर्ड्स फेस ड्यूरिंग द फ्लाइट जे माने जेतेबेले नॉर्थ टू साउथ आसंती कौन डिफिकल्टी फेस करती कौन डिफिकल्टी फेस करती। ओके तेणु ये देख इफ दे डू नॉट माइग्रेट दे विल पेरिश बर्ड्स फेस ए लॉट ऑफ ये देख बर्ड्स फेस ए लॉट ऑफ डेंजर एंड हार्डशिप्स while traveling long distance through the air over hills forest plains and large stretches of water। sometimes sudden storm arise एटा देखो sometimes sudden storm arise and drive them far out of the course often they are blown right into sea and are drowned in the wild waves। okay तो यहाँ हूँ आंसर कौन लिख ना बर्ड्स फेस ए लॉट ऑफ डेंजर्स एंड हार्डशिप्स व्हाइल ट्रैवलिंग फुल स्टॉप दब तापर लिख समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स राइज एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ द कोर्स। स्टॉर्म माने बहुत झड़ आसे एवं तांको कौन करे ना तांको माने ड्राइव करके नहीं जाए कोटी को द कोर्स। ओके ताको माने बोहे कर नहीं जाए झड़ ओफेन दे आर ब्लोन राइट इनटू सी से झड़ कौन करे समुद्र भितर को तांको पकई दिए एंड आर ड्रोन्ड इन द वाइल्ड वेव्स से वाइल्ड वेव्स जोटा कि माने गोटे वाइल्ड वेव जोटा ढेउ भितर से माने बुड़ी जाती। ओके यहाँ हूँ आंसर ठीक अच्छे। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न हूँ कौन व्हाट आर द राइटर्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ योर यंग बर्ड्स। तो यंग बर्ड्स मानकर माइग्रेटरी बा स्थानांतरण कौन सी बिहेवियर कथा राइटर कौन कहते ऑब्जर्व कर कौन राइटर ऑब्जर्व कर। ओके सो इट देखो एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट and confuse the birds. The migration speed is usually from 48 to 64, 89 answer. During migration it is usually the young birds, 80 asial answer. The young birds, the author sees that the young birds that fly at the front and the older ones in the rear. Okay
तेणु फ्रंट रे सबुठु आगे रे को माने जानती यंग बर्ड्स माने तापर फॉलो करंती ओल्डर वंस दे डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग इन फ्लाइंग फाइंडिंग देयर डायरेक्शंस ड्यूरिंग माइग्रेशन फॉर दैट दे आर गाइडेड बाय इंसेक्ट बाय इंस्टिंक्ट ओके तांकर इंस्टिंक्ट रु से माने गाइड होंती कहा केही तांको ट्रेनिंग दियंती नाही एटा होची यंग बर्ड्स ओके कथा लिखचंती तापर नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि yes what according to the writer is the migration speed of bird कोन स्पीड कथा लिखचंती the speed of birds migration 8 लिखाई छी the author says that the migration speed is usually from 40 to 64 kilometer an hour and rarely exceeds 80 बुझियो छी rarely exceeds 80 को क्रॉस करिबा टिके कष्ट तापरे ता सहित जो वोकाबुलरी क्वेश्चंस गुडा आमे करिबा टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड टू डाई टू बी डिस्ट्रॉयड आंसर कौन हम ना आंसर होची एठी पेरिश अछि देखो पिला माने दे विल पेरिश ए PERISH एटा होची क्वेश्चन नंबर 1 रो पेरिश ओके PERISH पेरिश माने डाई करि जिबा मरि जिबा किबा डिस्ट्रॉय हो जिबा तापर देखो रूट और पाथ टेकन जो रूट और पाथ टेकन होची कौन डायरेक्शन से मान जो डायरेक्शन नियंती से डायरेक्शन खोजे देले तुम पढ़ी देले तुम निश्चय पाई परिबो तो डायरेक्शन जोटा के डायरेक्शन बा डायरेक्शन कहते ओके तो एठी पिला माने देखो आमे देखिबा एठी डायरेक्शन ता कोठी अछि ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड साउथ डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी रे पिले ओके अच्छा तापर कौन देखिबा डायरेक्शन पर सरपास माने एक्सीड्स सरपास माने कौन एक्सीड्स ओके एटा जो अच्छी सरपास एक्सीड्स हम कौन एक्सीड्स सरपास टा कौन हम एक्सीड्स ओके आउ सेकेंड टा कौन हम डायरेक्शंस ओके डायरेक्शंस एटे डायरेक्शन देख दे आर डायरेक्शन ओके डायरेक्शन ओके आमे कहि देले तो कौन आंसर कौन ना टू डाई और एटा होची पेरिस PERISH पेरिस द रूट और पाथ टेकन डायरेक्शन ओके सरपास होची एक्सीड्स ओके एक्सीड्स ओके EXEEDS एट लिखाई छी EXEEDS ओके तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पिला माने नेक्स्ट प्रश्न कौन अछि नेक्स्ट प्रश्न पाई चार्ट ता मु तुमको कहि पाई चार्ट बहुत बढ़िया तो पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ एन ओपिनियन गोटे रिजल्ट ऑफ एन ओपिनियन पोल एमंग 100 रेसिडेंट्स ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा रो कैपिटल सिटी रे 100 रेसिडेंट्स माने 100 जन घरुआ लोक 100 जन भितर पोल हैला पोल करा गला ओपिनियन पोल ओके ऑन द इश्यू ऑफ एविक्शन ऑफ रोड साइड वेंडर्स रोड साइड रास्ता कड़े जो माने वेंडर्स माने अछंती बास जो दुकानी माने अछंती तांकर एविक्शन माने उठेई दबा उच्छेद करबा एविक्शन उठेई दबा पई गोटे ओपिनियन पोल हैछ ओके किए कोन कहिसंती राइट पैराग्राफ तण प्रथम कोन करबो प्रथम सेंटेंस लिखिबो द प्रेजेंट एटा चित्रटा कर दबो तापर लिखिबो द प्रेजेंट pie chart shows about the result of an opinion poll among 100 residents of the capital city of Odisha on the issue of eviction of roadside vendor लिख देबो ओके फर्स्ट सेंटेंस ता मु तुमको कहि एमति लिखियो बोले तापर कोन लिखिबो देखो द कोन लिखिबो द हाईएस्ट माने द हाईएस्ट percentage of people that is 45% they said yes okay they said yes okay eviction must be okay eviction must be made okay and about 30% people they said no okay जा देखो चल लिखिबो and 15% they became indifferent माने they became neutral indifferent okay and 10% people they said don't know okay तापर लिखिबो कंक्लूजन लिखिबो दे कौन लिखिबो ना आ गुटे सेंटेंस लिखिबो दे एज 45% the highest percentage of people they are in favor of eviction so the vendors have to evict them evict themselves okay तो एटा लिखि परिबो okay तेणु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन आछि हाँ एटा आछि डिक्शनरी स्किल रे देखो गिवन बिलो आर 5 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बीम गोटे अच्छी वर्ड तार 5टी मीनिंग दिया जाइछि
एंड सी जो पांचटी सेंटेंस तापर दिए मैच कर देख गोटे पर गोटे बुझा ए रे और द साफ्ट ऑफ लाइट गोटे प्रथम मीनिंग होची कौन बीम रो BEAM बीम बीम रो प्रथम मीनिंग होची ए रे गोटे किरण और साफ्ट लाइट गोटे लाइट और ए किरण ठीक अच्छे बुझीगल ए वाइड एंड हैप्पी स्माइल बीम रो गोटे वाइड एंड हैप्पी स्माइल गोटे बहुत विराट बहुत हैप्पी स्माइल तापर देखो ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड गोटे काठ कि मेटल जोटा कि यूज हुए सपोर्ट वेट मैंने घर वेट को संभालिया गोटे बीम दिया जाए टू सेंड रेडियो और टेलीविजन सिग्नल टेलीविजन रे सिग्नल आसे जमी खेल है कौटी कौन है सिग्नल आसे टू स्माइल हैप्पीली ओके ताले कौन हम आंसर देख पूरा गोटे गोटे प्रश्न मु बुझेबी तुमको ओके तो कहार ठीक है हाथ उठाओ एवं कह अभिलिप्सा इज बीमिंग विथ प्लेजर अभिलिप्सा इज बीमिंग विथ प्लेजर बीमिंग एटी कौन ना एटा होचे वर्ब रे यूज होची बीमिंग बीमिंग तो कौन हम टू स्माइल हैप्पीली ताले वन टा कौन हम ई हम टू स्माइल हैप्पीली ओके से हैप्पीली स्माइल करुची के अभिलिप्सा ओके हैप्पीली स्माइल ओके अभिलिप्सा इज हैप्पीली स्माइलिंग हैप्पीली विथ प्लेजर लगे देखले भी जना पड़ जाऊँगी देखो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग बीम्स इन द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस घर बींग तो घर बींग कौटा आमर होता ना घर बींग हूँ यहाँ ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड मेटल यूज टू सपोर्ट वेट ओके अच्छा तापर 3 नंबरटा कौन अच्छी द ए बीम ऑफ लाइट फ्लाश्ड इन फ्रंट ऑफ हर गोटे बीम ऑफ लाइट कथा कहूँ गोटे रे किरण कथा कहूँ तेणु 3 नंबरटा कौन हम 3 नंबरटा हो फर्स्ट 1 नंबरटा 3 नंबरटा ए हम ए रे और साफ्ट ऑफ लाइट ओके तापर देखा 4 नंबरटा बहुत इजी पड़ी बोला 4 नंबरटा ए बीम ऑफ सैटिस्फैक्शन एपियर्ड ऑन हर फेस ए बीम ऑफ सैटिस्फैक्शन एपियर्ड ऑन हर फेस माने गोटे सैटिस्फैक्शन माने बीम ऑफ सैटिस्फैक्शन तार मुहरे माने खेली गला ताले फोर्थटा कौन एटा नाउन रे यूज होची तेणु कौन हम ना ए वाइड हैप्पी स्माइल ता फेस रे आसीगला ठीक अच्छे ताले आउ लास्टटा कौन हम लास्टटा होची लाइव पिक्चर्स फॉर फिल्म ऑफ द फंक्शन वेयर बीम्ड अराउंड द वर्ल्ड माने पृथ्वी रे पूरा माने ताको संप्रसारण कर जाउची कौन हम ताले एटा हम कौन ना ए सेंडिंग थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल ठीक अच्छे ताले कौन हम ये कौन हम आईटा हम कौन ना सेंटेंस रू ओके आईटा हम ई ओके तापरे 2टा हम केते ता 2टा हम सी तापर देखो 3 नंबरटा कौन हम 3 नंबर सेंटेंस टारे येटा हम ए आ 4 नंबरटारे कौन हम 4 नंबरटारे बी आओ 5 नंबरटारे कौन हम 5 नंबर डी बुझीगला 5 नंबरटारे डी ओके तेणु यही भली भाव में तुम कर देखा रोड सेफ्टी एटा देख तुमर जो आसी रिपोर्ट राइटिंग ओके एनएसएस ए रोड सेफ्टी वीक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनएसएस विंग रोड सेफ्टी वीक करची स्कूल रे राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोग्राम टू बी सबमिटेड टू द प्रिंसिपल कौन कौन एक्टिविटी करची रोड सेफ्टी वीक रे ओके रोड सेफ्टी वीक रे मुझे बुझेती एटा तो कौन एनएसएस तेणु तुम्हें कौन लिख प्रिंसिपल पाखक तेणु तुम्हें माने तुम कॉलेज रो नाम लिखिदेव तापर डेट डालदेव तापर कौन लिख टू द प्रिंसिपल तापर कॉलेज ना डाकिदेव तापर माने एड्रेसटा लिखिदेव एड्रेसटा लिख देखिए सब्जेक्टा लिख कौन ना रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज्ड लिखिदे पार ओके रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज्ड ओके एमती लिखिदे पार तापर तुम्हें आलोचना कल जे रोड सेफ्टी वीक जो केबे डेट रु को डेट पर्यटन डिस्कस कर तो यही डेट रु डेट माने ऑब्जर्व है ऑर्गेनाइज्ड है आ कौटी ऑर्गेनाइज है रोड सेफ्टी वीक रे कौन कल माने केमती प्लाकार्ड धरिक तुम गल गाँ गहली रे किंबा टाउन रे जाकर ये कल चेक्ड हेलमेट चेकिंग कल ये कल सब लिख पुलिस पर्सन्स ऑल्सो हेल्प्ड अस माने पूरा लिख लास्ट रे तुम नाटी देदेव ठीक अच्छे हाँ अच्छा नेक्स्ट देखो एज ए न्यूज करेस्पोंडेंट मान न्यूज रिपोर्टर भाव में यू हैव विजिटेड ए विलेज गोटे गाँ को विजिट कर वेयर 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वेयर किल्ड जो गाँव रे कि 5 जन मरी जाइछंती बाय लाइटनिंग माने घड़घड़ी रे मरी जाइछंती ओके ड्राफ्ट ए रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट लेख इन अबाउट 200 वर्ड्स
200 शब्द भितर गोटे रिपोर्ट लेख ऑन सैड इंसिडेंट ये जो दुखद इंसिडेंट होती पब्लिकेशन इन द इंग्लिश डेली गोटे इंग्लिश डेली माने कौन सी न्यूज पेपर तब कौन कर प्रथम तो लिख आड्रेसटा लिख सपोज तुम्हें लिखल जे तुम्हें लिखल कौन सी भी सपोज तुम्हें लिखल बारीपदा ओके बारीपदा तापरे आड्रेसटा माने डेटटा डालदेल तापरे लिखल टू द एडिटर ओके कौन लिख टू द एडिटर लिखल टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर ओके टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख द टाइम्स ऑफ इंडिया भुवनेश्वर ओके तापरे तुम्हें ये लिख जे कौन 5 किल्ड बाय लाइटनिंग एमती लिख कौन 5 किल्ड बाय लाइटनिंग कौन लिख दे 5 किल्ड बाय लाइटनिंग एटा सब्जेक्ट है ओके तापर तुम्हें लिखि चल जे माने को गाँव में कौन व्हाट हैपेंड माने व्हेन हैपेंड केते बेले लाइटनिंग मारला एवं 5 केमती किल्ड करिगले आउ केमिति आउ कि इंजर्ड होइचंती कि एई गुडिक सब लिखि चल जिवो तापर दे वर टेकन टू वेयर आउ कोठी मरले कौन कले से गुडिक सब लिखिबो आउ से माने हेल्प पाइले ना नहीं ए गुडिक सब लिखिबो बुझियला तापर लास्ट रे तुम तुम ना देव न्यूज रिपोर्ट देव नोट्स आउटलाइन नोट मेकिंग ओके नोट मेकिंग टा मु माने तुमको कहीदेवी ठीक अच्छे आम आलोचना करवा नोट मेकिंग देख देख मुझे आलोचना कर दूसरी हेल्थ इज वेल्थ प्रथम दे देछि कौन हेल्थ इज वेल्थ ओके तो धरा पड़ जाए ये तथापि आम पढ़ीदेला ही जना पड़ा जे तार टाइटलटा कौन हम ठीक अच्छे प्रॉपर फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ हेल्थ ओके गुड हेल्थ डज नॉट ओनली मीन द absence of disease. It rather means enjoyment of full strength and vigor as well as freedom from signs of disease. Okay, most of the food we eat daily does not certain essential nutrients needed for the preservation of health and prevention of disease. There are various kinds of foods. Okay, various kinds of foods, protective foods, केते डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एटा भी आसी जिवो ओके डिफरेंट काइंड आमे टाइटलटा न लिखि के आगे कौन करबा आगे लिखि देबा हेल्थ ओके फर्स्ट पॉइंटटा कौन आमे लिखि देबा हेल्थ ओके हेल्थ लिखि देले तो हेल्थ लिखिला पर इट इज सब पॉइंट हबो कौन हेल्थ रे लिखि देबा प्रॉपर फूड ओके इट लिखा इज प्रॉपर फूड ओके तापर लिखि देलो माने मीनिंग हेल्थ रो मीनिंग कौन मीनिंग टा लिखि देबो ओके absence of disease okay absence of disease तापरे कमा दे के लिखिबा full strength and vigor बोली लिखि देबो ओके तापर देखो फूड आ गुटे लिखिबो हेल्थ रे तापर सी रे लिखिबो कोन ना फूड डिफरेंट फूड टू ईट रे लिखिलो डिफरेंट फूड कौन डिफरेंट फूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ तो कौन फूड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स कौन फूड्स नंबर 1 से लिखिदेव प्रोटेक्टिव फूड्स ओके प्रोटेक्टिव फूड रे लिखिदेव फूड रे तमें लिखिदेल माने कौन ना प्रोटेक्टिव फूड ओके प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोटेक्टिव फूड लिखिकी हाइपन देके लिखियो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ओके तापरे दे आर रिच इन प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स एनर्जी गिविंग फूड्स तापर देखल एनर्जी गिविंग तापर लिखल आउ गोटे होला एनर्जी गिविंग फूड यहाँ आउ गोटे एनर्जी गिविंग फूड लिख कार्बोहाइड्रेट्स बोली लिख रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स ओके तापर लिख बॉडी बिल्डिंग फूड ओके 3-4 लिख बॉडी बिल्डिंग फूड ओके बॉडी बिल्डिंग फूड लिख प्रोटीन ठीक अच्छे तापर ग्रोइंग चिल्ड्रेन एडोलेसेंट्स आर नर्सिंग मदर्स शुड कंटेन सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड फॉर एगुड़ा लिखोनी कहीं एग्जांपल गुड़ा अच्छी मेंटेन ऑफ बॉडी टिश्यू मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज नॉट सो इजी देखो गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन ईटिंग एंड बैलेंस डाइट एक्सरसाइज आउ कौन लिखो तापर आउ गोटे पॉइंट देदेव गुड हेल्थ लिखिदेकरी हाइपेन देके लिख बैलेंस डाइट नीड बैलेंस डाइट एक्सरसाइज रेस्ट ओके एवॉइडिंग टोबाको अल्कोहल ड्रग्स लिखिदेल हो गला तुम नोट मेकिंग तापर तुम नोट मेकिंग कर सारा पर तुम जानीगल जे कौन हेल्थ इज द टाइटलटा कौन हम हेल्थ इज वेल्थ ओके टाइटलटा हूँ हेल्थ इज वेल्थ ठीक अच्छे टाइटल हो गला समराइज केमती कर समराइज सर्ट करी से जो जोड़िकी लिख कौन लिख जे कौन हेल्थ इज वेल्थ फर्स्ट तो लिखिदेव हेल्थ इज वेल्थ ओके
गुड हेल्थ लिखिदेव गुड हेल्थ इज गुड हेल्थ गुड हेल्थ मीन्स ओके absence of disease full strength and vigor शॉर्ट करके लिखुच ना तापर लिखिब एंड तापर लिखिब कौन वी हैव टू टेक डिफरेंट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ओके फूड एंड न्यूट्रिएंट्स तापर लिखिदेव कौन फूड लिखिदेव प्रोटेक्टिव फूड्स prevent the disease protective foods prevent our disease and make us healthy okay तापर लिखिबो तापर कौन लिखिबो yes energy giving food is rich in carbohydrates okay सेटा लिखिबो okay physical labor एगुडा लिखिबा दरकार नै okay आ body building food is rich in proteins okay तापरे लिखिबो जे तापर लिखिबो एटी पळे आसीबो मेंटेनिंग गुड हेल्थ रिक्वायर्स बैलेंस डाइट एक्सरसाइज प्लेंटी ऑफ रेस्ट एवॉइडिंग टोबाको अल्कोहल एंड ड्रग्स बुझीला तेणु लिखिदेव हो तुम ठीक अच्छे तापर देखा समराइजिंग तो होगला तापर राइट एन एसे पड़ी इंटरनेट आमे सिलेक्शन देइथिले सब गुड़ाक बाजी इंटरनेट उपरे आ फेवरेट बुक लिखिबो ए जो पॉइंट गुड़िक एक्सप्लेन करके लिखिबो तापर आमे आउ ए गुड़िक डिस्कशन न करके आमे एरर फाइंडिंग रे पळेबा ओके एरर केतेटा आमे बाहरी पड़चे सेटा एरर फाइंडिंग देखो हैप्पीनेस लाइक द सन न होइकरी कोन हबो हैप्पीनेस इज मन रख हैप्पीनेस इज एटी बसिबो हैप्पीनेस इज लाइक द सन फुल स्टॉप हम हैप्पीनेस इज लाइक द सन फुल स्टॉप न होइकरी एटी व्हिच इज लागिबो ओके हैप्पीनेस इज लाइक द सन व्हिच इज ओके व्हिच इज often covered ed लागिबो ed covered with which is often covered by okay the clouds of worries बुझीला covered by the clouds of worries तुमको 10टा फाइंड आउट करवा अछि ग्रामर ठीक अछि if these clouds okay will not fade माने will not कौन हम will not be faded हम will not be faded एटा गोटे बाहरला okay if these clouds will not be faded we may not experience happiness ठीक अछि happiness does not depend with objects हबनी एटा does not depends on objects okay happiness does not depend on objects okay objects or events not only our anxieties okay not only our anxieties ठीक अछि but also our restlessness affect our happiness एटी कोनोसी wrong नाही okay तापर देखिबा wrong happiness is buried हबा happiness is buried buried हबा कहिना एटा पैसिव वॉइस रे हबा ओके happiness is buried under these emotions happiness is buried under these emotions okay our mind is constantly changing our mind is constantly changing okay our mind is constantly changing from one desire to another ठीक अछि okay तापरे therefore our worries अछि एटा प्लुरल अछि तनु multiplies नहीं multiply full stop okay multiply worries multiply तापर लिखिबो that न होय कि so okay so पर कमा so we should keep ourselves free from worries and anxieties okay free from worries and anxieties which are necessary okay we have nothing to do but to keep okay to keep we have nothing kept we have nothing to do but to keep our mind calm for happiness okay experts suggest that a calm mind is the key to success बुझेला पूरा माने क्वेश्चन टाको बुझेली पूरा क्वेश्चन टाको बुझेली कौन भूल है तुम कमेंट माध्यम निहाती जनइबो
तेणु समस्त को बेस्ट ऑफ लक सबू सब्जेक्ट पाई ओके तेणु थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवं जार मन अच्छी जे पूरा क्वेश्चन टाको देखापी कौन मोर भूल है कौन अच्छी ठीक है तेणु से माने निश्चय करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच समस्त को बेस्ट ऑफ लक वंदे उत्कल जननी।